गोलमाल के कैरेक्टर्स तो ऑफ कोर्स सारे कैरेक्टर्स हाउस होल्ड नेम्स हो गए हैं एंड बहुत फेम दिया इस फ्रेंचाइज ने हम सबको. आई वाज सो यंग एंड आई वाज सो न्यू टू द फिल्म लाइन दैट आई डिडंट नो हाउ टू How old डाइजेस्ट were इट. you then? I was 24. I'm proposing to Kareena in my dream. It's a dream sequence और मुझे लगी हुई है, मैंने एक चोट लगी हुई है, हर एन एक्सीडेंट. मैं एक छड़ी के साथ आता हूँ. When you're a part of the film fraternity, आप एक स्टार सन हैं और आप फिल्म फैमिली से आए हैं, तो एक सेक्शन होती है मीडिया की जो आप कितना भी क्यों ना करे, वो उनको लगता है कि ये द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. Hi, this is Tushar here and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi guys, my name is Urmin and welcome to Bollywood Hungama. आज के हमारे कलाकार जो है उनके बारे में क्या कहूँ, व्हाट एन आयरनी, क्योंकि इनकी पहली पिक्चर जो आई थी उसका नाम है मुझे कुछ कहना है, बट ही इज़ नोन फॉर अ कैरेक्टर जहाँ वो अलग अलग चीज़ें कहते हैं. बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अपने अंदाज में कहते हैं. नाउ प्लीज़ वेलकम तुषार कपूर. Thank you so much for the How very are you warm doing? welcome. How are you doing, Tushar? As good as it gets. And You look like you're in the best shape possible. बेस्ट शेप probably yes. Yeah. मैंने वेट लूज किया पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा और वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ रोज़, बट आई थिंक इट्स मोर टू डू विद आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है और आप मतलब किस मूड में होते हैं. सो आई होप आई एम लुकिंग लाइक आई एम हैप्पी. Yes, absolutely. That was my first thing. There was a breath of fresh air that came आपने when you इतना came वार्म in. वेलकम दिया थी, उससे ही मेरा मूड बट ये ठीक हो सोचा गया. आपने, मतलब जस्ट इवन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि पहली पिक्चर आई मुझे कुछ कहना है, और अब आपको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं बिकॉज ऑफ योर अमेजिंग कैरेक्टर इन गोलमाल, जिसमें आप जो कहते हैं वो हम सबको बहुत पसंद आता है. थैंक यू थैंक यू. गोलमाल के कैरेक्टर्स तो ऑफ कोर्स सारे कैरेक्टर्स हाउस होल्ड नेम्स हो गए हैं एंड बहुत फेम दिया इस फ्रेंचाइज ने हम सबको. जी. बट आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कुछ कहना है कि भी फैंस हैं. हाँ. जब मैं जाता हूँ मुंबई के बाहर, खासकर बी टाउन, सी टाउन, इवन इन सम पार्ट्स ऑफ मुंबई, यू नो, कॉलेज क्राउड एंड माई एज ग्रुप बोलते हैं कि हम कॉलेज में जब थे तो हमने मुझे कुछ कहना है देखी थी. सो इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज रोमांटिक फिल्म राइट. उस टाइम की. Correct. सो उसे अभी तक लोग भूले हैं नहीं, बट हाँ आई वुड से बच्चों में, फैमिलीज में जो एक रिकग्निशन मुझे मिली वो गोलमाल के की वजह से मिली. सो लेट्स जस्ट गो बैक इन टाइम और मुझे बताएं हाउ डिड फिल्म्स हैपन. आप असिस्ट करते थे डेविड धवन जी को. Yes. क्या फिल्म्स ही करना था, वाज दैट योर पैशन? आई वाज असिस्टिंग डेविड जी. एक्चुअली पहले तो मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट था मिशिगन में. ओके. एज आई फिनिश्ड कॉलेज मैंने एक साल की वर्क एक्सपीरियंस ली एंड देन आई बिकेम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट. और वो करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था. तो आई केम बैक टू इंडिया और डेविड जी को ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि हमारी एक फैमिली फिल्म बन रही थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बनने वाली थी ओके. उस टाइम पे. और मेरी फैमिली को लगा कि अगर आपको डिसाइड करना है फिल्मों में क्या करना है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है. राइट. सो व्हाइल आई वाज डूइंग दैट, ज़्यादा काम तो नहीं दिया गया था मुझे. इट वाज अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड कि आप अपना काम ढूंढो, दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. थोड़ा ओल्ड स्कूल था. हाँ. तो वहाँ मेरी मुलाकात रूमी जाफरी जी से हुई, जो कि वाशु जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे. एंड उनसे बातें करने के बाद आई थिंक उनको लगा कि एक फिल्म है जो वाशु जी के पास है, जिसकी राइट्स वाशु जी के पास है, और उसमें एक कैरेक्टर मुझे सूट करता है, या फिर मैं अगर फिल्म में ज्वाइन करना चाहूँ तो वो रोल मेरे लिए सही होगा. सो ही रेकमेंडेड माई नेम. और उसके बाद मुझे फ़ोन आया थ्रू टूटू शर्मा, जो मेरे डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड थे. उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि वाशु जी आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर एवरीथिंग अनफोल्डेड. सो ये आई थिंक थ्रू माई स्टिंट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. डायरेक्शन में तो कुछ भी सीखा नहीं मैंने उस टाइम पे, लेकिन मुझे एक एज एन एक्टर फिल्म मिल गई, एक ब्रेक मिल गया. बट इट वाज गुड राइट कि आप लॉन्च होने से पहले एटलीस्ट आपने एक माहौल चेक कर लिया कि Yes. कैसा होता है, शूट्स, लाइट्स वगैरह कैसे होते हैं. एब्सोल्युटली. So आई important. रियलाइज्ड कि ऑन सेट क्या चीज़ें होती हैं और किस एटमॉस्फेयर में फिल्में बन रही हैं उस दौर में. जी. बट जैसे मैंने फिल्में ज्वाइन की, द ईयर 2000 आई स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म, एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग वेरी रैपिडली. तब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया आफ्टर माई फिल्म रिलीज. सो दैट होल वर्ल्ड बिकेम अ वर्ल्ड ऑफ द पास्ट, स्पेशली दैट time when I was assisting David G.
दैट स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, आई मीन अभी भी चलता है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. आई एम अ मिलेनियल एक्टर, यू कैन से. आई केम एट द टाइम एट द कस्प व्हेन एवरीथिंग वाज रियली टर्निंग अराउंड कंप्लीटली. करेक्ट. साल 2001 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहा फॉर द फिल्म्स, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्में आई हैं. देयर हैज बीन लगान, गदर, दिल चाहता है, केथरी जी, एंड यू कम विद मुझे कुछ कहना है, Yes. जिसमें आपको अपना पहला डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला. Yes, yes. हाउ वाज द फीलिंग तुषार? डू यू रिमेंबर पहला सीन जब आपने शूट किया था? क्या यादें जुड़ी है विद दिस फिल्म? आई थिंक द मेकिंग द मूवी जो एक प्रोसेस था इस फिल्म को कंप्लीट करने का और इस कैरेक्टर को निभाने का, वो बहुत ही एक्साइटिंग था. अप्स एंड डाउन्स थे, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी नर्वस इनिशियली. फर्स्ट शेड्यूल वाज अ डिजास्टर. उसके बाद धीरे धीरे आई रियली इम्प्रूव्ड एंड माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर इवेंचुअली वर वेरी हैप्पी विद मी. बहुत खुश थे मुझसे, लेकिन बिगिनिंग में वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि ये रेडी है कि नहीं. दैट वाज हैपनिंग इनिशियली with the first schedule. Because you know, in a sense I was in Michigan and then suddenly I've come into the film line. The finance से direct. और उस ज़माने में that time actors used to prepare a lot before becoming you know debutants. तो मेरी तो कोई preparation थी नहीं. मैंने जब classes ली थी, fight classes, dance classes, acting classes. So it was very regular. So on the job I learned. Set पर मैंने बहुत कुछ डांट खा के सीखा and but I gradually improved a lot. So यू कैन नॉट से, आप कह नहीं सकते कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ आपको लगेगा नहीं कि ये फर्स्ट फिल्म का हीरो है. आई विल बी वेरी प्राउड टू से दैट. एंड बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ लगेगा कि हाँ ये नया हीरो है. सो देयर वाज अ ग्राफ दैट चेंज्ड, यू नो, फ्रॉम द फर्स्ट स्केड्यूल टू द सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल. एंड इस फिल्म को प्रमोट करना, बाय द टाइम हम प्रमोट कर रहे थे तो मतलब द फिल्म हैड टर्न आउट टू बी वेरी कलरफुल. एंड जैसे ही प्रोमो शुरू हुए टीवी पर तो द फ्रेशनेस वाज अनदर लेवल ऑलटुगेदर एंड पीपल वर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. एंड गाने हिट हो गए, खासकर रब्बा मेरे रब्बा जब रिलीज हुआ तो सारे गाने हिट हो गए. एक गाने के बाद तो सारे गाने हिट हो गए. सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी. In fact, your sunglasses had become so famous that you Those had worn. Oakleys. Yeah, those. Yeah, I I still bought them in remember. New Zealand. And हम लोग न्यूजीलैंड गए थे आउटडोर के लिए. हाँ. And we used to shoot from, we used to get up at 5 o'clock and shoot till 10 o'clock, क्योंकि वहाँ विंटर में गए थे. हमारा विंटर वहाँ का, उनका समर था. So it was like 17-18 hour days. तो हम लोग पूरा 17 घंटे शूट करते थे. It was great fun, tiring but great fun. हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई और इतनी सक्सेसफुल हो गई तो आफ्टर दैट आई थिंक इट वाज नॉट सो एक्साइटिंग. आई वुड से एंजाइटी क्रीप्ट इन कि अभी कैसे हैंडल करूँ इस सक्सेस को, कैसे बरकरार रखूँ. इज इट रियली अ सक्सेस? नॉट, यू कांट रियली, यू नो, आई मीन इतना मेहनत किया है और इतनी सफलता मिली है, लेकिन आई वाज सो यंग एंड आई वाज सो न्यू टू द फिल्म लाइन. आई डिडंट नो हाउ टू डाइजेस्ट इट. How old were you then? I was 24. I was 23 when I shooting started and 24. So not really young, but very new in the film line. But did like stardom hit you? No, no, no. It's not that I became overconfident or arrogant. ऐसा बिल्कुल नहीं. मेरा nature. No, I didn't mean it that way. I meant like. नहीं, but होता did you just see that coming? That oh wow. Yeah, that was there. I can see people being. I'm famous now. That was there. जैसे मेट्रो सिनेमा में गया पहले दिन ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, तो there was a lot of love and a lot of excitement from all the fans in the cinema hall. And बहुत letters आते थे मुझे. उस ज़माने में हैंड emails शुरू हो गई थी, लेकिन fans used to write letters. तो मुझे रोज़ बहुत letters आते थे. And it was genuine fan following from the small towns, from the heart of India, from हमारी जो actual Indian audience है, उनके letters आते थे. So it was not like media hyped, social media hyped. It was a very, very genuine box office super hit. लेकिन उसके बाद of course, you know, when you're a part of the film fraternity, आप एक स्टार सन है और आप फिल्म फैमिली से आए हैं, तो एक सेक्शन होती है मीडिया की जो आप कितना भी क्यों ना करे, वो उनको लगता है कि ये द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. करेक्ट. सो वो बहुत उस टाइप की काफ़ी कुछ मतलब आई वुड से नॉट सो प्लेजेंट articles were also there, but I didn't know how to handle that part of it at that time. I was very young. I didn't realize कि ये सबके साथ होता है. आपके लिए मतलब 90% अगर पॉजिटिव हो तो 10% नेगेटिव भी होगा, खासकर अगर आप एक स्टार सन हो. तो द बेंचमार्क्स आर मच हायर एंड नो मैटर व्हाट यू डू, आपको ऐसे जज किया जाएगा कि अच्छा ये सब है लेकिन ये सब नहीं है. करेक्ट. You know, so they will always want to look at you as something that should be perfect. Yeah. Because you are
compared, and you know, so And also the mind but that's works. part of the game, and उसमें कुछ गलत नहीं है. I think advantage and हर चीज में advantages होती है, disadvantages होती हैं. But I was too young to handle that part of it. So the success also was, I was like, is it really a success? And how do I keep it going? What do I do now? How do I choose my films? Should I be very choosy? Should I not? A lot of things were not very clear to me. I was learning. It was like a learning curve for me. And then there was the little bit of negativity also, Yeah. which was of course painful. I Right. mean, but that's part of growing up. That's part Correct. of becoming a Bollywood actor. So अगर वो नहीं होता तो maybe I wouldn't have become stronger. I wouldn't have been able to, you know, keep fighting. So it was a beautiful experience at that point of time. I also feel that the mind works in such a mysterious way ना. 9 अच्छी चीजें हमें मिलने चाहिए के चाहिए बाद चाहिए चाहिए जब मिल जाती तब आप कंफ्यूज हो जाते थोड़े. नहीं, also like you get 9 good things and then the one thing that affects you is that one negative comment. Yeah, It's yeah. so We weird. become very myopic. Yeah. You कि know, अरे यार टोटल पूरा 10 अच्छा क्यों नहीं मिला मुझे. you have to learn to detach yourself from the part you're playing as a star or as an actor and look at yourself from the outside. Ki, okay, if this was happening to somebody else, how would I judge it? You'll definitely be more lenient. You'll be less harsher because it's so close to you and it's so. I mean, you're so into it that objectivity आप खो देते हैं. So it's very important to detach and see that okay, no, it's all good. There's good and there's bad, but this is how it is. This is how life is. And this is how films are. On the whole, it's all good. Right. That I learned How later. nice. Yeah. आपको आपका पहला शॉट याद है इस फिल्म में कौन सा था? Yeah, my first shot was I'm proposing to Kareena in my dream. It's a dream sequence और मुझे लगी हुई है, मैंने एक चोट लगी हुई है, I had an accident, so मैं एक छड़ी के साथ आता हूँ. And I remember I was wearing a black t-shirt and I had a putty in my hand हाथ पे पट्टी थी, हाँ हाथ पे पट्टी थी, sorry, yeah. और मैं करीना को प्रपोज करता हूँ and she rejects me. She thinks that you're just a friend. So वो मैं इतने शॉक में हो जाता हूँ and मेरा सपना खुल जाता है. So that was the first scene. और कैसा था रिएक्शन ऑन द सेट? On the set, they were all trying to be very nice, but I could sense that Satish ji was getting a little panicky. He was getting a little panicky कि अरे यार ये कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि I think मेरे reactions थोड़े raw थे. वो मेरा first day था, but I remember him telling me also by the time there was a 5-day schedule. The 4th and the 5th day जैसे हुआ, he said he felt he was inspired by me, which was a huge compliment for me. So I guess warming up होती है, and if you really like it, if you have it in you, warm up आप हो जाओगे. That is the main thing. And how close was Karan Sharma, the character, to Tushar Kapoor? Was it Mart Sharma or was it? Yeah, Karan Sharma. Oh, Karan Sharma. Karan, I remember was the character's name. Karan So, Sharma. I've checked. I think बहुत लोगों को लगता है कि ये कैरेक्टर मेरी तरह है, बहुत सिंपल है, मैं भी ऐसा ही हूँ. In some ways it is like that. I am a bit shy. आई एम नॉट वेरी सोशल और थोड़ा मतलब मुझे टाइम लगता है लोगों से ओपन अप होने में. बट आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस कैरेक्टर. ही वाज अ वेरी दिल्ली बॉय, मतलब जो मतलब थोड़ा प्रोटेक्टेड, वेरी फैमिली में मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हूँ. आई एम नॉट सो बॉन्डेड टू माई फैमिली फिजिकली, इमोशनली ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन देम. आई डू मोस्ट ऑफ माई थिंग्स ऑन माई ओन एंड आई एम अ सिंगल फादर ऑल्सो नाउ. तो ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही मतलब आई वुड से मच मोर सिंपलर वर्जन ऑफ मी, दो देयर आर ट्रेट्स दैट आर वेरी वेरी सिमिलर, बट बाय एंड लार्ज आई एम मच, I would like to say I'm a much stronger person than this character, you know. So the film comes out and then of course I have to also ask you about working with Kareena. 2000 में उन्होंने अपना debut किया and then the next year she worked with you. How was the experience working together? She worked with me while I was shooting. We had started shooting, her film released. So June 2000 में हम लोग ने शुरू किया था मुझे कुछ कहने की shooting, and I remember the premiere was was in a couple of days. Okay. So it was around the same time, and she was like this celestial being on set. I won't be lying when I say that ऐसा लगा कि ये कोई अलग ही लड़की है, you know. She's not your regular heroine. She was so beautiful on set, or on set even when you see her without makeup or she'd stand and give the shot, you know. कभी-कभी आप देखो तो ऐसा लगता है अरे यार ये मतलब ये कोई हॉलीवुड स्टार आ गई है, you know, हॉलीवुड स्टार from the 50s. She had that kind of a beauty, very classic beauty, and very fresh looking, and her beauty was at that time, especially on set, everyone is to like, you know, just get stunned by her looks, and ऐसा लगता था कि किसी ने एक halogen लगा दिया, you know, that kind of
aura she has in person. So of course I didn't really get to know her too well. पहली फिल्म के टाइम पे मैंने इतना मैं उनको इतनी तरह जानता नहीं था. हालांकि लोगों को लगता है कि अगर आप स्टार किड्स हो तो आप सब एक दूसरे को मिलते रहते हो और आप एक ही ग्रुप हो. हाँ, हमारे हिसाब से तो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है कुछ चल रहा है, and we are like one fraternity and we are like we probably know we meet या every फिर day. रात को आप लोग खाना खाने के बाद बैडमिंटन खेलने मिलते हो, ऐसा कुछ सोचते हैं हम. But I didn't even know her. I met her first time. बचपन में मिला था एक दो बार, but I met her first time on the set of मुझे कुछ कहना है. And we didn't even talk much because it was more professional. Then मैं इतना focused था. I was more into my director and getting the work done. So it was like ठीक है, you know, hello, how are you kind of a thing. And it's like after the movie released and when we did जीना से मेरे लिए, तब हम लोग एक दूसरे को जाने लगे. So it was a slow process. Gradual process. Yes. So the film comes out and इतना प्यार मिलता है आपको, आपके कैरेक्टर को, and on to top of that you get your Filmfare Award as a debutant. My first award was a Z award. It was a Z award. Yes. Okay, the Z award. Yes. क्या चल रहा था मन में? Like the innocent Tushar Kapoor, did he make like this speech कि मुझे ये बोलना है, I want to thank this person, this person, this person, जो आप देखते आ रहे हैं इतने सालों से? I didn't really enjoy it, and I was shooting for another film at that time when I got the Z award. So my dad he went and collected it. और I think वो वैल्यू नहीं था उस टाइम पे. हम लोग को पिक्चर हिट हो गई ना, तो उसके बाद ऐसा लगा कि ठीक है ये हो गया है. बट आई वॉज मोर इनटू कि अभी सेकंड फिल्म कैसी होगी, कैसी जाएगी. थोड़ा मैं अपने आप को ढूंढ रहा था उस इंडस्ट्री में उस टाइम पे भी. सो आई वुड से कि अगर अभी ऐसा मौका मिले तो आई हैव अ पार्टी, आई हैव अ रैप पार्टी और सेलिब्रेट विद माय को स्टार्स व्हाटएवर. उस टाइम पे आई वाज फिर भी थोड़ा trying to find my bearings. So I would say I missed out on enjoying all these moments. I think because we are so much in a rush, in a hurry, especially when we start off our careers, कि हम दौड़ में ही लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें रुकना चाहिए और मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, जो मैं आज करता हूँ. You know, even if I'm very busy, I'll take time off and spend time with my son, or I'll spend like I promoted my book and I gave it a lot of time. At that time it was only about just movies and next. What is, you know, what to do next? Interview करना, ये करना, magazines, ये वो. I think it's age also. घर पर माहौल कैसा था तुषार? How was it having a superstar in the house? How was everything at home? Pretty normal. और actually we lived in a building. We lived in a bungalow which is part of a building compound. तो the upbringing was pretty normal. Building के दोस्तों के साथ खेलना. 80s, I was an 80s kid. तो वीडियो कैसेट्स पे मूवीज देखना फ्राइडे सैटरडे. वेरी वेरी टिपिकल मुंबईकर अपब्रिंगिंग. एंड आई वुड से मिडिल इनकम स्टाइल ऑफ अपब्रिंगिंग. दो वी वर एन एक्टर्स किड्स एंड वी वेंट टू बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल एंड ऑल दैट. लेकिन फिर भी आई थिंक जो माहौल था घर पे और जिस माहौल में हम खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, वो टिपिकल था. और डैड ही वाज ऑफ कोर्स in and out. He was in Mumbai, he was in Chennai, he was in Hyderabad. तो आप जब कहती है ना कि I'm an out and out Mumbai kid, I used to live half my week in South India. Okay. पहले Chennai and then Hyderabad. So we used to be Monday to Thursday in Mumbai, Friday to Sunday we used to go to the South. तो हम लोग half वहाँ के हैं और half यहाँ के हैं. क्या बात है. So that went on for at least twice 2 weekends in a month. हाँ. या 3 weekends तो हम लोग वहीं होते थे. अच्छा. So we grew up partly there. And हैदराबाद में घर भी था हमारा. So with the family we used to go sometimes to Hyderabad, to that house, and we used to celebrate the weekend there with some relatives and family friends. And फिर of course 1994 में I went to Michigan. I was there for 5 years, and I would say that's when my life really began. You know, that's when I really opened my eyes to life and independence and the world outside. And I feel whatever I am today is because of my years in the US, the 5 years that because I spent. That's when you discovered yourself. Discover yourself. क्योंकि हम जब इंडिया में भी शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन when you are living in a film family, मतलब जैसे आपने कहा सुपरस्टार की फैमिली में, आप इतने प्रोटेक्टेड होते हैं, इतने मतलब कि आप अकेले दुनिया देख नहीं पाते. तो you don't even know who your true friends are, who are not. True. Who, what is your passion करियर वाइज, जो आपको फीड किया जाता है, यू नो, जो मतलब आपने देखा है ग्रोइंग अप, आपको लगता है कि वही है. या फिर आप जो स्टडी करते हैं आपको लगता है वही है, पर आपका जो इनर वॉइस है वो क्या है, वो मुझे अमेरिका में मिला. सो द अपब्रिंगिंग वाज नॉर्मल, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ बिट शेल्टर्ड एंड इट वाज
I needed to go out. I needed to get Yeah. out. I needed to find myself. Correct, correct. Hi, this is Tushar here, and you're watching me on Bollywood Hungama.